cue cards. Are these cue cards creating havoc in your mind? Are you scared of cue cards? So let me remove all your stress regarding this cue card section, which is the second section of your speaking test. Okay guys, now what exactly is this cue card? The benefit of cue card is that you get time to prepare. What else do you want? And this is just one question. Yes, now you will say that, oh, though it is one question, we have to speak for almost 2 minutes. So why are you hesitating? You just have to create a story and you have to present. What story? Okay guys, so here cue card is that section that provides you a question which is based on some or the other situation that is connected with you. If not connected, then you have to create it. You have to create that connection between you and the question. Again, there is one more advantage over here. It is not that difficult. Why? Because it is not just one question, it comes with 3 or 4 sub questions. Now these 3 or 4 sub questions actually are there to help you develop the idea, or I can say develop the sequence of idea. So instead of getting tensed that okay, I have a cue card and under that I have 3 or 4 or 5 questions, so I have to think about so many questions. No, you just have to think about one question and the remaining sub questions are there to help you to line down your ideas. Okay friends, now how to prepare, now how I should make my notes that can prove to be really useful for me. Now whenever you are given the question of cue card and you are given 1 minute to prepare, you are given a pencil and a paper to actually make notes. The best way to do this is, in the sequence of those sub questions, you should also make your notes. The notes that you are making, that sequence and the question sequence should match. जब भी आप उन questions के notes बनाते हो, mind well that you are not writing sentences. You're just writing words, 1 or 2 words. That's it. And once you are done, then you have whole lot of 2 minutes to showcase your idea, to win the ground. Okay, now here I would like to give you an advice. जैसे हमको पता है कि क्यू कार्ड 2 मिनट का होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो टेस्ट जो एग्जामिनर है वो मुझे 2 मिनट तक बुलवाएगा ही. नो, इट इज़ नॉट श्योर. My examiner might stop me after 1.5 minutes. So what care should I take? मेरे जो भी सब क्वेश्चंस है उनके आंसर्स फर्स्ट मिनट में कंप्लीट हो जाने चाहिए, and then after I can continue to explain my further points in the latter 1 minute. Okay, so यहाँ पे काफ़ी लोगों को एक दिक्कत आती है कि यार आइडियाज़ जनरेट नहीं होते. ओके फ्रेंड्स, आइडियाज़ जनरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले ये कि आप उस थॉट प्रोसेस में से बाहर आ जाओ कि क्यू कार्ड डिफ़िकल्ट है. नो, दे आर एक्चुअली नॉट डिफ़िकल्ट. हमको सिर्फ एक सिचुएशन क्रिएट करनी होती है और वो सिचुएशन प्रेजेंट करनी होती है. मान लो कि यू आर नॉट हैविंग अ कंप्लीट स्टोरी. सो व्हाट बेस्ट कैन यू डू? Whatever idea you are having, आपको कोई भी आइडिया जो आया उस क्वेश्चन से रिलेटेड, the moment you start to attach questions to that idea, why did this happen, how did this happen, what was the result, what was the circumstances, मैंने वो सिचुएशन को कैसे डील किया, मुझे उस सिचुएशन से क्या सीखने मिला,
जब आप आपकी ये एक आइडिया के पीछे ये क्वेश्चंस आप लगाते हो, क्वेश्चंस फॉलो करते हो, आइडियाज़ अपने आप आना शुरू हो जाता है. You'll never fall short of ideas, guys. Okay, let's take an example. क्योंकि मुझे पता है आप ऐसे तो नहीं मानने वाले, तो चलो एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको समझते हैं. मैं आपको 2 क्वेश्चंस पूछूंगी. पहले एक, if I ask you this question, describe a beach walk that you have experienced. Again, describe a beach walk that you have experienced. First off, this is your question. इसके नीचे मैं आपको सब क्वेश्चंस देती हूँ. When did you experience? Experienced with whom? How did you feel? And why do you remember? अब मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 4 क्वेश्चंस एक्चुअली में मुझे आइडिया डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल है? जैसे when did I experience? I can say that I experienced this before COVID, or I can say in 2019. तो अगर मैं स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग हूँ तो ये एक्सपीरियंस मैं वेकेशंस में क्रिएट कर सकती हूँ, या तो whenever I feel like. ओके, फिर मेरा क्वेश्चन आता है कि with whom did you experience? So either I can go with my parents or obviously with my friends. तो मैं फ्रेंड्स को साथ में लेके जा सकती हूँ. उसके बाद में मेरा क्वेश्चन था कि how did I feel? So now I have to actually start walking on the beach in my imagination, and I have to feel the situation. And the last question that came was, why do I remember? So definitely अगर मैं आपको ये कहूँ कि पहले के जो 2 क्वेश्चंस है वो तो मेरे फर्स्ट सेंटेंस में ही आ जाएंगे, that this happened in 2019 or 2018 XYZ, and it was the time of winter or summer or whatever you are you're having in your imagination. And you can say that I had gone on a long trip with my friends to Goa or Maldives, or you can say Port Blair, and then you start to create the story. एक मैं आपको की देती हूँ फॉर दिस क्यू कार्ड. जितना स्ट्रॉन्ग और क्लियर आपका इमेजिनेशन होगा उतना क्लैरिटी आपके प्रेजेंटेशन में होगा. काफ़ी बार हमने देखा है कि हमारे थॉट्स नहीं होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है, हम सिर्फ माइंड में सोचते हैं कि हाँ हम बीच पे हैं, लेकिन बीच का सिचुएशन क्लियर नहीं होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, या हम हमारे फ्रेंड्स के साथ में गए हैं तो बीच खाली है, कोई नहीं है, सनसेट का टाइम है या सनराइज़ का टाइम है, क्या टाइम, हमारे सामने ये सिचुएशन ही नहीं होती. और इस वजह से दिस इज़ द प्राइमरी फैक्टर जिसके वजह से हम आइडियाज़ डेवलप नहीं कर सकते या जनरेट नहीं कर सकते. तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप टू प्रिपेयर द क्यू कार्ड इज़ टू जनरेट द आइडिया. आप कोई भी एक टॉपिक लो और जस्ट इमेजिन कि वो टॉपिक में मुझे क्या बोलना है. ज़रूरी नहीं है कि मैंने कभी बीच वॉक किया ही हो, लेकिन अब आंसर तो देना है, बैंड्स तो चाहिए. तो मैं क्या करूँगी कि मुझे कैसा बीच पसंद है, क्या होना चाहिए बीच पे. आई विल क्रिएट दैट, and whatever I have created in my imagination, I'll present it. आपके स्पीकिंग में वो स्पार्क होना चाहिए, एनर्जी, या वो आई कैन से ऐसा लगना चाहिए सुनने वाले को कि वाओ दिस इज़ अ रियल सिचुएशन. There should be, I can say, I often tell my students that it shouldn't sound dry. It shouldn't be just for the sake of speaking or giving answer. It should have feel, it should have emotions. When you pour all these things into your speaking, the entire quality changes. The quality of your presentation, expression, everything changes.
सो फ्रेंड्स, जब भी आप क्यू कार्ड के ऊपर वर्क करते हो तो हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि उस क्वेश्चन को इफ़ पॉसिबल पास्ट के साथ कनेक्ट करो, प्रेजेंट पे लेके आओ और उसको फ्यूचर के साथ में कनेक्ट करो, तो यू विल नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ आइडियाज़। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मेरे फ्रेंड्स के साथ में आई हैड बीन टू गोवा इन 2018 माई वेकेशंस ड्यूरिंग विंटर्स, सो देन आई हैव टू से आई देन हैव टू इमेजिन कि मॉर्निंग में बीच वॉक करना चाहिए मुझे या इवनिंग में करना चाहिए। इफ़ आई से दैट ओ नो आई वांट टू टेक अ बीच वॉक इन द इवनिंग, सो आई विल हैव द एंटायर सिचुएशन राइट इन फ्रंट ऑफ मी इन माई माइंड। So then I'll start to describe it कि मैं अकेले वॉक कर रही हूँ या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ में है लाइक यू कैन थिंक दैट, या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ में है, या मैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे 3-4 फ्रेंड्स हम सब साथ में चल रहे हैं, या पेरेंट्स मेरे साथ चल रहे हैं। तो वो टाइम कैसा है, क्या बीच साइलेंट है या और भी लोग हैं, या मैं जब सनसेट हो रहा है तो मुझे पूरा एनवायरनमेंट कैसा दिख रहा है। आई कैन से दैट व्हाइल वी वर वॉकिंग वी वर टॉकिंग ऑन XYZ टॉपिक्स और वी वर जस्ट enjoying the nature. We were willing, or I was basically willing to stay in the nature. While I was walking, I was also collecting the shells. And the waves, they were quite mild. They were coming and touching my feet and going. The water was quite calm. There were seagulls, or there were I can say birds. अगर मेरे को seagulls नहीं पता तो मैं बोल सकती हूँ कि there were few birds. Those were flying on the surface of the water. They were making, they were chirping, and at the same time the sun was dripping inside. The sun was getting dissolved into the water at the horizon. At this moment, I was just absorbing the beauty of nature. I was actually mesmerized by seeing the spread orange and pink color over the sky and on the surface of the ocean or sea. So जब तक ये चीज़ आप खुद इमेजिनेशन नहीं करते, आपको क्लियर दिखता नहीं है, आप उसको खुद इमेजिनेशन नहीं करते, तो अगर आपने ही इंजॉय नहीं किया, आपने उसको फील नहीं किया, तो वो आपके कंटेंट में रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। ओके, मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। Let's talk about furnitures. So I'll ask you a question of furniture. Describe a furniture that is there in your house and which is your favorite. So what could be my follow-up questions? I can have the questions like what is that furniture, when did you purchase it, and why do you like it? So definitely it is, I can say it's a sofa, or it's a bed, or it's a Clara TV cabinet, anything I can say. अब जो भी फर्नीचर मैंने पिक किया तो मुझे उसका इमेजिनेशन करना है कि अगर सोफ़ा सेट के बारे में अगर मुझे बोलना है या डाइनिंग टेबल के बारे में मुझे बोलना है तो मेरा फेवरेट डाइनिंग टेबल कैसा होगा या सोफ़ा सेट कैसा होगा। सो आई कैन, अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इफ़ आई टॉक अबाउट सोफ़ा सेट, तो मुझे एकदम रॉयल, लेजेंड एंड एंटीक काइंड ऑफ सोफ़ा सेट पसंद आएगा। तो बस बचता क्या है, मुझे सिर्फ उसको इमेजिन करना है और जैसा दिखता है मेरे इमेजिनेशन में, आई जस्ट हैव टू प्रेजेंट इट। सो डोंट यू थिंक this having clarity of imagination becomes very easy for me when I think कि क्वेश्चन कुछ भी हो मैं उसको कैसे आंसर करना चाहूँगी। Just that friends, today itself sit down and work on 2 to 3 cue cards. तो आज ही आपको ये चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एक्चुअल में क्यू कार्ड पे वर्क करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, सिर्फ आपको इमेजिनेशन में क्लैरिटी लानी है। दैट्स इट। सो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।